let us welcome our diamond from US, Mr. Greg McTee. Ladies and gentlemen, Zordar Taaliyon ke saath, Mr. Greg McTee. Hi, Dr. Yoga. How are you? Oh, I'm doing fantastic. You chose me to translate. Let us see what happens today. Okay, fantastic. Well, what I'm going to do, just real quickly, and Yoga, I want to thank you for translation. First of all, I want everyone to know that I hope you're safe. I know many of you have been through some of the most challenging times possibly in your life, if not most recently. You've lost loved ones, and there's a lot of despair out there, but also with that, there's tremendous opportunity. And so I just want to encourage all of you to continue to be safe, but it's time to take off the gloves and start providing for our families, our communities, and the various people that we love. So I just want to, welcome everybody and know that, the COVID has been a bit of a challenge. Okay, सब लोगों का स्वागत है, so मैं क्रिक से बार-बार बोला, हिंदी मेरा मातृभाषा नहीं है, सेकंड लैंग्वेज भी नहीं है, फिर भी मेरा अपलाइन है, so इसलिए मैं ट्रांसलेट कर रहा हूँ, थोड़ा मिस्टेक तो आप प्लीज एडजस्ट कर दीजिए, फिर भी लेट्स हैव फन, so ग्रेग बोल रहे हैं, हम सब लोग का स्वागत, मुझे मालूम है, इंडिया में अभी कोविड का प्रॉब्लम चल रहा है, so कितना दर्द है लोगों के जीवन में, फिर भी, ये दर्द के बीच में एक अवसर भी है, अपॉर्चुनिटी भी है, so मैं सब लोग को स्वागत करना चाहता हूं सबसे पहले थैंक यू Great. Okay, well, what I'm going to do here, Yoga, I'm going to pull up some slides, and I just want to see, can you guys see this okay? Not yet. Okay, so I might need screen share. Sharing. It will. Okay, great. Let me do that real quick. Okay, there it is. All right, and hopefully that pops up now. How are we looking? Yes, it's coming. Okay, fantastic. Absolutely. Right. Well, first of all, let's what I'd like to talk about today is going to be a little bit different in that our company, obviously built on a tremendous reputation and foundation, is really science-based. We're not really a big marketing company, but having said that, we've established such a foothold globally with our products for decades that, we are always talking about product, and it is the key to our success. But today, I'm going to talk a little bit about 10x income growth, and as business owners, how we can really improve ourselves in this current climate, because the climate has changed in terms of how we do business. So it's going to be a little bit more on how we can break through our income levels and the psychology that we have to deal with as men and women in our business. So मुझे मालूम है, यूनिसिटी इतना अच्छा कंपनी है, so पूरा दुनिया में, यूनिसिटी का प्रोडक्ट तो सब लोग के मालूम है, यूनिसिटी प्रोडक्ट इतना अच्छा है, so हमें हमेशा प्रोडक्ट हमारा बिजनेस का कोर है, हमको भी मालूम है, हमेशा हम प्रोडक्ट के बारे में हम बात करते हैं, फिर भी आज मैं आपसे एक अलग चीज बात करना चाहता हूं, that is 10x income growth, 10 गुना आमदनी विकास। ये आज हम बात करेंगे क्योंकि हम बिजनेस ओनर हैं, हमको जानना जरूरत है कि कितना दर्द चल रहा है, इसके बीच में कैसे हम हमारा बिजनेस को हम आगे बढ़ सकते हैं, ये हमारा टॉपिक है आज। And we've got to remember that success is a choice. You can do a little or you can do a lot. It's completely up to you and I. See, सफलता एक विकास है, सक्सेस इज अ चॉइस, ये आपका चॉइस है, आप डिसाइड करेंगे, आप सक्सेस हो सकते हो। So the first thing I want to talk about before we get into the income is really what we need to realize on a big picture is we have a global convergence going on. A global convergence is a series of events that all line up at the same exact time, that while on one hand may seem to create many challenges for us, on the other hand, can literally create the best business opportunity you've ever touched. So convergence of global events can be both positive and negative. And we're going to talk about how COVID has turned into a very positive vertical for us in the wellness business. अभी पूरा दुनिया का अभिचारण चल रहा है, कन्वर्जन चल रहा है, सो इसमें ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है।
फिर भी अभी कोविड का पूरा दुनिया के कैसे हमारा सिस्टम को कैसे बदल किया, सो ये सिस्टम के ऊपर आज कैसे हम एडवांटेज लेंगे उसके बारे में आज हम बात करेंगे। So with the global challenge in COVID, it has created awareness that we have never seen in our lifetime of the general population globally. We're obviously operating in over 50 countries. So number one, this health pandemic, we literally have the immune system products and the wellness vertical to literally offer this to the general public in all 50 countries, especially India. अभी पूरा पूरा ग्लोबल में, पूरा दुनिया में ये स्वस्थ का महामारी चल रहा है। इसके हमारे पास इतना अपॉर्चुनिटी है, हम कैसे ये स्वस्थ का महामारी को हम यूज कर सकते हैं और हमारा बिजनेस के हम आगे कर सकते हैं। The second convergence we're seeing globally is an income pandemic. So because of COVID, it pretty much shut down most countries globally. We've got hundreds of millions of people that are out of work that were not out of work 2 years ago. And so now they're reevaluating, they're coming back into the marketplace, they're realizing, wait a minute, I had a job and I was let go, a year ago, my job's not coming back. So more people than ever, the sharper, brightest people we know are looking for alternatives to earn income in addition to their regular job if they're able to retain that. See, एक साइड में हेल्थ का पैंडेमिक, स्वस्थ का महामारी चल रहा है, और एक साइड में इनकम का पैंडेमिक, आय का महामारी भी चल रहा है। सो सो एजुकेटेड लोग, बहुत शार्प लोग सोच रहे हैं, मैं अभी क्या करूंगा, मेरा जॉब का प्रॉब्लम है, मेरा जॉब का पूरा इनकम नहीं आ रहा है, मेरा जॉब का गारंटी भी नहीं है, मैं क्या करूंगा। सो बहुत लोग पैसा के बारे में एक साइड में सोच रहे हैं। So what I want to talk about here, just briefly, give you an idea of the Foundation of Unicity. And this is really important because we really seek foundation, contribution, we seek security. These are things that we seek as individuals, both on a personal level and a business level. So as you move forward, having seen all the uncertainty with COVID over the last 2 years, having an absolute foundation, a history of results, a history of winning, this is going to be critical. Whether it's Unicity or another company, a great example, Yoga, would be Tata Motors. When I think of Tata Motors, when we think of that in America, we think, wow, foundation, what a company, what an example of leadership. So please understand, for those prospects that we have on this call, the ability to align yourself with a company that's has a heritage of over 100 years is extremely rare, but it assures you that if you work hard the next 2 years, you're going to be paid the next 20 years. आज आप हमारा मीटिंग में पहले बार आया है, आप कृपया 1 मिनट सोच लीजिए, आप हम दो वर्षों हम देखेंगे क्या हुआ, कितना लोग को जॉब कर गया, सो स्टेबिलिटी नहीं है, इनकम नहीं है। सो ये सच समय है, हम एक अच्छा कंपनी को फाउंडेशन स्ट्रांग होना चाहिए। ग्रेग सर ने यूनिसिटी के बारे में नहीं बातें हैं, फॉर एग्जांपल टाटा इस बहुत बड़ा अच्छा कंपनी है। सो अभी हमारा आगे जाने के लिए आज हम सोचना पड़ेगा, हमारा फ्यूचर के लिए हम सोचना पड़ेगा, एक अच्छा कंपनी, उसका ग्लोबल प्रेजेंस और उसका फाउंडेशन स्ट्रांग होना चाहिए। इसलिए ग्रेग सर ने हम आगे जाने के पहले यूनिसिटी के बारे में हम थोड़ा बात करेंगे। The second area that I would want people to really appreciate is our products. Again, we are science-based, we're not a marketing company, but what really sets us apart from our worthy competitors is you will find several of our key products in India are actually in the physician desk reference book. So सबसे पहला हम देखा यूनिसिटी कंपनी, 115 years का कंपनी, ग्लोबल कंपनी, स्ट्रांग फाउंडेशन, 50 देशों में अभी काम चल रहा है। दूसरा हमारा प्रोडक्ट विज्ञान पे साइंस बेस्ड प्रोडक्ट है, और ये डॉक्टर का किताब है, पीडीआर किताब, उसमें हमारा प्रोडक्ट है। सो नंबर 1 इज कंपनी, नंबर 2 हमारा प्रोडक्ट।
Yeah, and very well said, Yoga, because these are a couple of things that really set us apart from the competition. Another one, which we'll touch on briefly, is our international capability, which allows you now through e-commerce and the internet to really have a global business right in your living room from India. So, see, बहुत कंपनी है, आपके पास बहुत चॉइस भी है, फिर भी यूनिसिटी का सबसे बड़ा अलग क्वालिटी क्या है, कंपनी का स्टेबिलिटी और कंपनी का प्रोडक्ट। हम देखेंगे अभी तो सब लोग घर में हैं, अभी ऑनलाइन मार्केटिंग, कंप्यूटर के साथ काम करना, इंटरनेट के साथ काम करना, अभी तो शुरू हो गया है। कैसे यूनिसिटी आप घर में बैठकर यूनिसिटी का काम आप कैसे जला सकते हो, हम देखेंगे आज। And what's really amazing is not only are we a wellness company, science-based, but the laser focus that our research and development doctors have and scientists have are focused on immune system and diabetes. So these are two of the biggest killers, not only globally, but also in India. So it's not like we're dealing with some vitamin that makes you feel better the next day. We're dealing with things that can really lower blood sugar, lower cholesterol, a complete body transformation, a complete economic transformation if you apply it in your business. यूनिसिटी का प्रोडक्ट साइंस बेस्ड प्रोडक्ट है, पूरा दुनिया में इतना डॉक्टर्स लोग और साइंटिस्ट लोग अटेस्ट किया है और फॉलो भी कर रहे हैं, यूज भी कर रहे हैं। अभी पूरा दुनिया में क्या चल रहा है, इम्यूनिटी, राइट, रोग प्रतिरोधक का शक्ति, so everybody is talking about immunity, right? So so यूनिसिटी का प्रोडक्ट आपका रोग प्रतिरोधक शक्ति को भी बढ़ सकता है। So आज हम इसके बारे में हम देखेंगे। Here's what's great. I'm kind of a show me type of person. So the reason many of us, including myself, many years ago before Unicity, were not successful is because we pretty much listened to all of our friends who at that time were not successful. So we have a tendency in our psychology to get affirmation on various things that we're doing. Yes. And what's important is that we focus on the facts and we seek out mentorship, people that have already done it. What's great about the history and heritage of Unicity is look at the endorsements here. And you'll find these in the PDR, the products, of course, but these endorsements from the American Diabetes Association, the American Heart, some of the biggest universities around the world. Our company, this is what really sets us apart. If you're sitting there and you have a worthy competitor, you just look at them and say, hey, are your products in the physician desk reference book being used by doctors? They aren't. And so I just want to really drill home how important this is. Great point. Okay, सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज आप कुछ लोग आप बैठ रहे सोच रहे क्या यूनिसिटी कितना कंपनी है, कितना कंपनी, हम क्यों यूनिसिटी करना है। सी हमारा जीवन में बहुत बार हम किसको सुनते हैं, वो लाइफ में सक्सेस नहीं हुआ उसको हम सुनते हैं। ओके, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्या चीज है, आप सक्सेस लोगों को सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप भी आपका खुद रिसर्च करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यूनिसिटी प्रोडक्ट में बारे हम देखेंगे, आप देख लीजिए, आपको स्लाइड में ग्रेग ने आपको दिखा रहा है कितना साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट का ये सर्टिफिकेशन हमारा प्रोडक्ट के साथ मिल गया है। अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन, जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी, क्लेवलैंड क्लिनिक, सब सर्टिफिकेशन मिल गया। सो यू कैन बी अश्योर्ड, आप अश्योर हो सकता है यूनिसिटी का प्रोडक्ट कितना कॉम्पिटिटर है, हमारा प्रोडक्ट सबसे उससे अलग है। Great. Now what I want to do is switch a little bit towards the psychology, the e-commerce, and how we make money. First of all, in life, most of us are seeking simply to just be happy. And sometimes it can take an entire lifetime to figure out how that is. But what are really three pillars of happiness in our life? And those three pillars in life are health, wealth, and time. How is our health, our wealth, and our time? Many times these are out of balance. They may be very much out of balance for you right now, but that can change very quickly. So I'm just going to focus briefly on these three areas. हमारे जीवन में हम सब लोग क्या चाहिए, हैप्पीनेस, खुशी होना चाहिए। फिर भी हमको पता नहीं कैसे हम हैप्पीनेस हम पहुंच सकते हैं, राइट। सो ये तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर वन, हमारा स्वस्थ, हमारा हेल्थ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर टू, पैसा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, हमारा पैसा होना चाहिए, और हमका समय, सो हेल्थ और वेल्थ, समय।
ये तीनों इकट्ठे आपको मिल गया, सो यू विल बी हैप्पी. सो एक मिल गया और एक नहीं मिला तो आपका जीवन में खुश नहीं होगा. सो इसके बारे में हम थोड़ा बात करेंगे. And Yoga, maybe you could touch here a little bit. We call it a lifestyle index, and of course the health we're always trying to improve. For me personally, when I started my Unicity business, I could have definitely used an improvement in health. But so many times people, for example, people that have great wealth have no time, or people that have a lot of time have no money. What we're talking about is a lifestyle that you can live with, that you can be happy, a balanced life that would give you what we call a diamond life. Maybe you could expand a little bit on the lifestyle index, Yoga. एक आपका स्लाइड में आप देखेंगे तीन चीज है. नंबर 1, स्वस्थ का स्वतंत्र. आपका हेल्थ पक्का होना चाहिए. हेल्थ में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, वो होना चाहिए. बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ. आपका हेल्थ अच्छा नहीं तो कितने पैसा तो आपको मिल गया, क्या फायदा है. कुछ लोग बहुत अमीर है, कितना पैसा है, हम बोल भी नहीं सकता, फिर भी हेल्थ अच्छा नहीं है, वो मीठा भी नहीं खा सकते, राइट. सो नंबर 2 इज आपका वेल्थ. पैसा भी चाहिए, पैसा के आजादी भी बहुत इंपॉर्टेंट है. और कुछ लोगों के पास हेल्थ है और पैसा भी है, फिर भी टाइम नहीं है, सो उसे पता नहीं कि बेटी कौन है, बेटा कौन है, सो दे डोंट नो, राइट. सो ग्रेग सर क्या बोल रहे हैं, सो तीनों इकट्ठे मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है. उसको हम बोलते हैं डायमंड का लाइफ स्टाइल. यूनिवर्सिटी में आपको डायमंड बन सकते हो, आपको तीनों एक साथ मिल जाएगा. ये बहुत कुछ इंपॉर्टेंट. ये हमारा फोकस है, ये हमारा मिशन है, ये हमारा प्रोजेक्ट है. So let's take a look at this is a cash flow quadrant. It's become quite famous from Robert Kiyosaki, a famous author of Rich Dad Poor Dad. And what's interesting about this is so many of us now say, man, businesses have changed. And it's not necessarily that businesses have changed. It's how businesses are operating globally now. So they might still have the same incredible products they've had for decades, yet they're operating at a completely different level with different tools. So what I want to focus in here on this quadrant is how we can go from the employment side, where we, work and create somebody else's dream, to the business side, where you can actually have your own financial independence and control your own lifestyle and time. इसमें आप देखेंगे कैसे लोगों को पैसा आता है. इसको इसमें 4 लोग है. नंबर 1 एम्प्लॉय, कर्मचारी, ओके, काम करने वाला. ओके, सो लेफ्ट साइड में वो ग्रीन वाला है, वो कर्मचारी. वो ये सेल्फ एम्प्लॉयड, ओके, स्वयं कर्मचारी, सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल भी है, वो दोनों लेफ्ट साइड में है. राइट साइड में आप देखेंगे बी, व्यापारी, ओके, और आप आई देखेंगे इन्वेस्टर, जो निवेश करता है. सो लेफ्ट साइड में आपको पैसा मिल जाएगा, फिर भी बिल्कुल समय, आपका टाइम आपका हाथ में नहीं है. सो इसलिए आज हम बात करेंगे कैसे आप लेफ्ट साइड में हो, कैसे आप लेफ्ट साइड से राइट साइड यूनिसिटी बिजनेस के द्वारा आप राइट साइड में आ सकते हैं. क्योंकि आप राइट साइड में आएंगे तो आपको पैसा भी मिल जाएगा, आपका समय भी मिल जाएगा. पैसा और समय मिल जाए तो ऑटोमेटिकली आपका हेल्थ भी ठीक हो जाएगा. इसलिए हमारा प्रोजेक्ट क्या है, आपका लेफ्ट साइड है तो आज आप लेफ्ट साइड से कैसे आप राइट साइड आ सकते हो. Now here's what's interesting. 97% of everybody around the globe is working for somebody else, and they're on the left side. पूरा दुनिया में 97% लोग किसी को काम कर रहे हैं, खुद काम नहीं कर रहे हैं, मालिक के लिए काम कर रहे हैं. 97% लोग लेफ्ट साइड में है. 3% are on the right side, where they're building a passive income in a business like Unicity. And so you want to give yourself a little bit of credit, pat yourself on the back that you're engaged in your own online wellness business. You may not have all the answers. You may be highly frustrated, believe you can't do it. But the fact that you're over on the right-hand side, you've got to give yourself some credit. We've got to be grateful. So many times we go through life and we're always shot down or pushed down, or our dreams are diminished. The fact that you're here on this leadership call and you're focused on an online wellness business, this could be the biggest thing you've ever done, which is what happened to me. Only सिर्फ 3% लोग राइट साइड में है. ग्रेग बोल रहे हैं सो आप आज ये मीटिंग में है, आप यूनिसिटी का बिजनेस कर रहे हैं,
आप राइट साइड में हैं, वो 3% लोगों के अंदर है। आप सब लोग क्या करना, आपको पीछे की तरफ पैक करना है। ओके, सो मैं अच्छा काम कर रहा हूं, आपको थोड़ा कर्व होना चाहिए, क्योंकि आप राइट साइड में है और पूरा दुनिया में कितना लोग है, 3% लोग राइट साइड में है। सो आज आप यूनिवर्सिटी काम कर रही हो, ये मीटिंग कर रही हो, मेकिंग राइट चॉइस, आपके साथ बहुत कर्व होना चाहिए। Before I move into the benefits of the online business, I just want everyone to know I used to do commercial real estate. And I had this dream of having my own business, but I wasn't able to leave my commercial real estate business because I had to pay the bills. I had 3 sons. And, so finding a business that I could move into gradually without jeopardizing my primary income, which was taking care of the family, the ability to move across a financial bridge or an income bridge slowly without risk to my family. This was a real key business item for me personally, and I hope you see it also. बहुत बहुत सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज हम इंटरनेट से काम करने के बारे में हम बात करेंगे। उसके पहले मैं ये बोलना चाहता हूँ, प्लीज ध्यान से आप सुनना है, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी के आने के पहले मैं रियल एस्टेट में काम करता था। ओके, सो घर के लिए पैसा का बिल चाहिए ना, बिल आ जाएगा, घर का रेंट पे करना, बिल पे करना, सब पे करना। मैं नया बिजनेस शुरू करने, नया व्यापार शुरू करने के लिए मेरा मन नहीं था, क्योंकि मैं रिस्क नहीं ले सकता था, क्योंकि मेरा तो बिल तो आ जाएगा। सो मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, सो कैसे मैं रियल एस्टेट काम भी मैं करूंगा, इनकम भी कमाऊंगा, प्लस मैं एक दिन बिजनेस में भी आना है। सो मैं सब लोग को अभी आपको मालूम है ये कैसे बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि दोनों मैनेज करना पड़ता है। सो ये मेरा सिचुएशन था, मैं सोच रहा हूं आप मेरे साथ रिलेट कर सकते हो। I've got these benefits up on an online business because it's really what's going to be able to set you apart and avoid any kind of a future challenge if we had another pandemic. And what I mean by that is the ability to have a low startup business. Maybe a lot of you don't have much money right now, but you have big aspirations and dreams. The ability to start up for a very minimal amount is extremely rare in terms of businesses of this caliber. We're obviously scalable. The ability to leverage through the internet. For example, when COVID was here, and I'll go through these, and I know you'll hit them right after me. During COVID, there was no interruption of my income. And in a couple of cases, income actually went up. Now, how could that be? It's because we're online. And so the ability to scale online and to kind of choose your own work schedule, this was very, very important to me. Also, the fact that we're a global company. Imagine, you have a brother-in-law in the United States or Australia, and he has a diabetes concern. The ability to click a button and drop it on his doorstep in Australia, and you were at a coffee shop in India. This is absolutely amazing. This didn't exist 20 years ago. So these are just a few items in addition to having, being open 24/7. The ability to have that kind of leverage for virtually pennies on the dollar. We're so busy thinking about the challenges. We have mindsets of all the problems that we have. We need to be extremely grateful and blessed that Unicity can provide this kind of an enterprise platform. And when you really start to look at what we have and the tools that we have here to grow India, you start to see that the possibilities are endless. ग्रेग सर ने क्या बोल रहे हैं, अभी कोविड का पैंडेमिक पूरा दुनिया में महामारी का प्रॉब्लम चल रहा है, आपको भी मालूम है। सो यूनिवर्सिटी का बिजनेस में 3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका एंट्री लेवल का आपका बिजनेस शुरू करने के लिए आप कितना इन्वेस्ट करना है, ये बहुत बहुत कम है। कंपनी तो बड़ा कंपनी है, अपॉर्चुनिटी तो बहुत बड़ा है, फिर भी आपका एंट्री लेवल बहुत कम है, ये सबसे बड़ा एडवांटेज। और दूसरा एडवांटेज क्या है, हमारा कंपनी तो 50 कंट्रीज में है। हो सकता है आपका ऑस्ट्रेलिया में आपका दोस्त है, आपका पड़ोसी है और आपका रिलेटिव है, आप इंडिया में बैठकर ऑनलाइन में उसको लिंक बेच सकते हो, वो उधर परचेस कर सकते हो, उसका प्रोडक्ट तो उसको डिस्पैच हो जाएगा। सो आपको घर में बैठकर आप ग्लोबल बिजनेस आप कर सकते हो। और आपका बिजनेस ब्रिक एंड मॉर्टर बिजनेस से आपका ऑनलाइन से काम करने शुरू करना क्यों इंपॉर्टेंट है, हो सकता है फ्यूचर में और एक पैंडेमिक और एक
महामारी हो सकता है। सो आप सब लोग सोचना, ये आपका अपॉर्चुनिटी है, ये सही समय है आप आपका खुद ऑनलाइन का व्यापार शुरू करने के लिए। Fantastic. Quickly, let's talk a little bit about timing, everybody. Timing is important. I mean, you think about it. Many of you are married. Imagine the first day that you met your husband or wife. What were you doing? Were you on the fly? You were just getting a cup of coffee, and now you're with somebody 30, 40 years later. So timing is very important in our life. What you need to understand coming out of this presentation tonight is that the second fastest growing industry on the planet is in the wellness and healthcare industry. The only thing that's moving faster than that is the IT and automation. So if you're not a computer expert or you don't own the computer company, how are you going to get into that industry? Are you going to go build somebody else's dream? No. So the ability to focus on your own wellness business online, maybe while you work for somebody else, this is extremely important to understand the timing. समय बहुत इंपॉर्टेंट है आप सब लोग के बारे में, क्योंकि सही समय पर सही काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी पूरा दुनिया में सबसे बड़ा इंडस्ट्री आईटी, नंबर 1 इंडस्ट्री आईटी है। नंबर 2 इंडस्ट्री हेल्थ केयर का इंडस्ट्री, हेल्थ और वेलनेस का इंडस्ट्री नंबर 2 इंडस्ट्री है। इतना पैसा लोग कमाते हैं। सो आपका आपका आईटी में काम नहीं है, आपका आईटी का बिजनेस नहीं, तो आपका सेकेंड बेस्ट चॉइस आपका हेल्थ केयर वेलनेस में आपका बिजनेस शुरू करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझना बहुत जरूरत है। Yeah, and one last thing I want to share. If you look at this chart, if you see the orange healthcare vertical going up, we are in the very lower left of that. We're in the very minimal stage in India right now. We have not gone through this momentum stage. All companies go through various forms of growth, leading to momentum. Apple Computers, Microsoft, Google, on and on and on. So the ability to be in the lower left-hand graph of that corner in India, and knowing that in the next 5 years, we're going to see this tremendous growth towards immune and diabetes awareness even further, that's the key to creating any kind of leverage or wealth. So you're definitely in the right place at the right time. You're just going to have to take massive action. और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, से आप ये ग्राफ में देख सकते हो ऑरेंज कलर। ओके, सो सब कंपनी यूनिसिटी है, टाटा मोटर्स है, इन्फोसिस है, सब कंपनी का ग्रोथ अलग अलग स्टेज में होता है। ओके, शुरुआत में मोमेंटम बहुत स्लो रहता है, उसके बाद मोमेंटम बढ़ता है, राइट। सो यूनिसिटी का भी, इंडिया में यूनिसिटी का मोमेंटम आज भी बहुत कम है। हम शुरू में है, वो ऑरेंज लाइन में, हम लेफ्ट साइड में, हम नीचे है। आप देख सकते हो ऑरेंज का लाइन कितना ऊपर जाता है। सो आज आप यूनिसिटी के साथ हो, वो यूनिसिटी का मोमेंटम स्टार्ट होने के बाद आपका इनकम भी बढ़ जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट। And this is an important chart. Right now, the opportunity for you in India, I would spend 99.99% of my time just trying to grow India. But I want you to know, once India is huge, the ability for you to be interacting with relatives, friends, and other people in 50 other countries electronically, where we literally have physical offices where we'll go drop the product off to your customer. For example, I have income from approximately 14 different countries. So what does that mean? It means you're diversified. Maybe there's a problem in one country, a disaster or something. So the ability to be diversified and yet have a seamless business that touches all 50 countries, this will scale your income beyond a level. There's no guarantees. We don't make any income guarantee, but the ability to have that opportunity to grow your income creates significant leverage both on the product consumption side and the income side. So ग्रेग सर क्या बोल रही है, अभी आपका फोकस 99% इंडिया में होना चाहिए। एक दिन आएगा आपका इंडिया में आपका बिजनेस इतना बड़ा है, आप और कंट्री के भी ऊपर भी फोकस कर सकते हो, क्योंकि यूनिसिटी का बिजनेस 50 कंट्री में अभी चल रहा है और नया नया कंट्री भी लिस्ट में आ जाएगा। सो आपका अपॉर्चुनिटी है, आपका रिलेटिव्स के ऊपर, आपका फ्रेंड्स के द्वारा आप पूरा दुनिया में आपको बिजनेस को एक्सपांड आप कर सकते हो। So guys and ladies, let's switch gears a little bit. Let's talk a little bit of psychology.
what's going to be the biggest challenge for us? Is it our money? Is it our education? Is it our past? And the answer is no. The biggest challenge to you achieving your wealth, health, and income needs are going to be you and everything up here. We have these beliefs and we have these mindsets. So we're going to talk a little bit about it just briefly. आपका लिमिट, आपका एकमात्र सीमांकता आप है, सो आप किसी आपको रुक नहीं सकता है, आप खुद आपको रुक सकते हैं। इसलिए आज हम थोड़ा माइंडसेट के बारे में हम बात करेंगे, मानसिकता के बारे में हम बात करेंगे। And the reason I wanted to touch on this is this was my biggest challenge. So let's just touch on these real quick. Number one, the biggest challenge that we have in moving forward is fear. And what we need to realize, fear is an illusion. It's something that hasn't happened yet. हमका सबसे बड़ा हमारा ब्लॉकेज क्या है, हम डरते हैं। ओके, हमारा मन में डर आता है सबसे पहला। बट डर मतलब क्या है? एक डर तो एक मोह माया है, एक इल्यूशन है, ये रियल नहीं है, क्योंकि हमारा मन में डर है, बट अभी तक कुछ नहीं हुआ, फिर भी हम मन में डरते हैं। Yeah, 99% of what we actually fear never happens. Those are the numbers. 99% of everything we think is going to happen today, tomorrow, next month never happens. आप थोड़ा सोच लीजिए, 99% आपको किसके बारे में आप डरते हो वो रियलिटी में नहीं आ जाएगा, फिर भी हमारा माइंड कहाँ जाते हैं? हमेशा हम डरने के पीछे हमारा मन भगता है। And you say, well, Greg, that sounds great, but I'm fearful. I'm nervous. I don't have money. I don't have this. I don't have that. So what do? This is what we do. You run with your fear. So if Yoga grabbed my arm and I try to, go away, I'm resisting everything. I'm not going to get away from him. But if he has my arm and I move towards fear, I run with fear. In other words, as I go out and build my business, I am fearful. But that will also get me up early and make me go to bed late. So acknowledge it's okay to have fear, but don't let it just completely disarm you. Great point. So Greg sir क्या बोल रहे हैं? ओके, ठीक है, आप ग्रेग आप बोल सकते हो, मत डरो, काम करो, ये करो, वो करो, आप बोल सकते हो, भैया मेरे पास डर है, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं डरता हूँ, राइट? सो ग्रेग साहब, ओके, ये क्या सॉल्यूशन क्या है? बहुत आसान सॉल्यूशन है। ओके, आपका डर के साथ आप फ्रेंडशिप बनाओ, डर के साथ आप भाग जाओ। तो आपको डर को रेसिस्ट करेंगे, ओ मैं नहीं डरना, मैं नहीं डरना, मैं नहीं डरना, वो नहीं होगा। आप क्या करना है? हाँ मैं डरता हूं, हाँ मेरा मन में डर है, फिर भी मैं बाहर जाऊंगा, मैं मेरा काम मैं करूंगा। ये आपका सॉल्यूशन है। So what's holding us back? So well, हम the same thing. Go ahead, Yoga. So हमको क्या, किस चीज हमको रुकता है? The same thing that's been holding us back our whole life. We have these limiting beliefs. हमारा मन के अंदर, आपका मन के अंदर थोड़ा लिमिटिंग बिलीफ है। ओके, सो वो सीमित अनुभव, राइट? सो मैं ये कर सकता हूं, ये नहीं कर सकता हूं। आपका मन में विश्वास है, सो विश्वास के अंदर थोड़ा सो वो सीमित अनुभव, आप ये कर सकते हो, ये नहीं कर सकता, ये कर सकता है, ये नहीं कर सकता। आपका विश्वास में एक लिमिट है, ये हमारा प्रॉब्लम है। We believe maybe we don't have the education. हम सोचते हो मेरे पास एजुकेशन है, मैं नहीं पढ़ा। I'm too young, I'm too old. मैं बहुत छोटा हूँ, मैं बहुत बूढ़ा हूँ। I don't have any money. मेरे पास पैसा नहीं है। Oh, in the past, everything I've done in the past has just not worked out. These are all limiting beliefs. मैं कितना काम किया, कितना बिजनेस स्टार्ट किया, मैं सब मैं क्या टच कर रहा हूँ वो खराब हो जाएगा, मुझे मालूम है। So I have a tip that helped me. If you want to change your life, change your beliefs. आपका जीवन को आप बदलने के लिए आपका विश्वास को बदलना जरूरत है। As you sit here, your heart may be saying, man, this business, I see it, I feel it. I've seen numerous people that are acquaintances or friends in Unicity that have made it. But the mind up here, this is the one that'll keep us from moving forward. So think more from the heart, move from the position of love and power. This heart is 99% of what powers our body. Yet we listen to the 1% up here, which never happens. See, आप ध्यान से ये सुन लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका शरीर को 99% शक्ति कहाँ से आ रहा है? आपका दिल से आ रहे हैं।
फिर भी हम क्या करते हैं, हम दिल को हम नहीं सुनते हैं। हम दिल बोलते हैं हाँ सिगरेट के देख लीजिए, वो लीडर को देख लीजिए, यूनिवर्सिटी अच्छा कम, आप दिल को पूछो, दिल बताएगा ये यूनिवर्सिटी अच्छा कंपनी है, मैं जीत सकता हूं। फिर भी हम क्या करते हैं, हम दिल को हम नहीं सुनते हैं, हम रॉन्ग आदमी को सुनते हैं, वो हमारा ब्रेन, ओके, हमारा मन को सुनते हैं। सो और हम डरते हैं, हम काम नहीं करते। आपको दिल को सुनने के लिए शुरू करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। And our beliefs carry with them consequences. So when you think about this, when you get off the call tonight, ask yourself, if I remain with these limited beliefs, what is my business going to look like 6 months from now or 1 year from now? What is my relationship going to look like? What am I losing? Who am I missing in my life? Whether it be business, love, relationships, whatever. So these limiting beliefs, it's okay to have them, but you need to break through them by reading, books and videos on leadership development. Continue to grow as a person. आप सोच लीजिए आपका लिमिटिंग बिलीफ, आपका सीमित का अनुभव, राइट, मन में आपका लिमिटिंग बिलीफ है। आप ये बिलीफ को आप वैसे छोड़ेंगे, आप देख लीजिए आपका जीवन कैसे होगा 4 साल, 5 साल, 10 साल के बाद। आपका पैसा के प्रॉब्लम कैसे होगा, आपका रिलेशनशिप रिश्ता कैसे होगा। सो आप क्या करना, आपको लिमिटिंग बिलीफ को, वो सीमित अनुभव को आप तोड़ना है। कैसे आप तोड़ सकते हो, आपको सीखना है, पढ़ना है, बुक रीडिंग करना है, अच्छा सीडी को सुनना है। तो सुनकर आपका लिमिटिंग बिलीफ को आप तोड़ना बहुत बहुत जरूरत है। ये किसी का हाथ में नहीं है, ये आपका हाथ में है। And by the way, the past does not equal the future. So आपका पास्ट इक्वल आपका पास्ट इज नॉट फ्यूचर। आपका अतीत भविष्य के बराबर कभी नहीं होगा। ओके, सो अतीत भविष्य के बराबर कभी नहीं होगा, याद करना है आप। Some of the wealthiest people in India, some of the most powerful businessmen and women, the magnates of India, who have done very well, are from extremely poor and poverty-ridden places. And yet they listen to the heart, not the mind. They continue to grow. So continue to push yourself and realize that the past doesn't equal the future. आप सोचना है, आप हमेशा हम क्या सोचते हैं, हमारा अतीत पास्ट के बारे में हम सोचते हैं, ओ मेरा पास्ट तो खराब था, मेरा फ्यूचर भी खराब होगा। वैसे नहीं है, क्योंकि अतीत भविष्य के बराबर कभी नहीं है। सो आपका बहुत आप देख लीजिए, इंडिया में कितना अमीर लोग है, उसका पास्ट तो बहुत कमजोरी था, नुकसान था बिजनेस में, बहुत मुश्किल था, फिर भी वो अमीर बन गया। सो डोंट कंपेयर, आपका पास्ट के बारे में मत सोचना, पास्ट को रुकना है, आप नया फ्यूचर आप क्रिएट कर रहे हैं। So as we move forward, everybody, this is very important. You have to remember, what are like 2 of your most important needs? What are your needs? Is it growth? Is it contribution? I didn't have a PhD, I didn't have an MBA, but I have a PhD in results. So how is that I wasn't the sharpest, the brightest, had no money, everything against it, and yet I was able to go out and build a global business with income from 14 countries? I'll tell you how. Action. Yes. So massive action trumps knowledge every day. You could have a PhD here with all this knowledge. I call it knowledge on ice. I would rather have somebody that's action oriented, that's moving from the heart, that's willing to follow a proven system. आप स्लाइड देख लीजिए, आपका ड्रीम, आपका सपना और आपका रियलिटी, ओके, आपका वास्तव, राइट। अभी आप क्या देख रहे हो, आपका रियलिटी, आपका वास्तव है, आपका मन में आपका सपना है। यहां से उधर जाने के डिस्टेंस में क्या आपको ब्रिजिंग कराया, आपका एक्शन, क्रिया। इफ यू डोंट एक्ट, यू कैन नॉट रीच योर ड्रीम। आपका रियलिटी में आप भग जाएंगे। आपका ड्रीम अचीव करने के लिए एक ही चीज, आपको कितना पढ़ा कितना नहीं पढ़ा, वो कि मुझे नॉलेज है, मैं डॉक्टर इंजीनियर, उसमें कुछ नहीं है। ओनली वन थिंग, एक ही चीज है, क्रिया क्रिया क्रिया, action. And people that have taken action, incredible leadership in India. If you look at Dr. Chandra, you look at Dr. Shastri, you look at Sharma and Deepak and many of these various leaders out there. They have all given their blood, sweat, and tears. They know the system. So don't try to innovate, just simply duplicate.
follow the proven path. The challenge with India is everybody's so intelligent, you actually think you know everything, and so you don't follow the system. And that's okay, you know. But KFC chicken, McDonald's, Starbucks, Apple, all of these franchises have proven systems. So have the humility, and if your business and life isn't where you want it over the last year or two, maybe approach these people and say, hey, how did you do it? You know, I want to be part of that. Tell me what to do. You know, इंडिया में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? You know, so हमको you know कितना इंटेलिजेंट है, हम सोचते हैं मुझे सब मालूम है, ये सबसे बड़ा you know प्रॉब्लम है. फिर भी you know आप देखेंगे you know so एक्शन लेने वाला you know हमारा लीडर्स को हमारे इंडिया में you know इतना बड़ा लीडर है. सब लीडर्स से देखो, डॉक्टर चंद्रा जी के देख लीजिए, ओके, रामकृष्णा के देख लीजिए, शर्मा जी के देख लीजिए, डॉक्टर शास्त्री के देख लीजिए, मनीष को और दीपक जी को देख लीजिए. You know, ये लोग के you know एजुकेशन पर में कुछ नहीं है, ओके, वो लोग नम्रत है मन में, ओके, हमेशा सीखने का मन है, एक चीज. नंबर 2 एक्शन, वो क्रिया के ऊपर यूनिवर्सिटी को बिल्ड किया. सो उसका you know पीसीएम रैंक you know सो आकाश से नहीं आया, वो काम किया, इतना मेहनत किया रात और दिन. सो हमारे पास ऐसे लीडर हैं, सो हम भी मेहनत करेंगे, सो हमारा लीडर से हम सीखेंगे, फिर हम भी जीतेंगे एक दिन जरूर, 100%. All right, well, we're going to wrap up here real quick. I was asked to share some of, you know, more on a personal level. I have a tendency to be very business acclimated, but on a personal level, I just want to show you my life before Unicity and after Unicity. So before Unicity, this is where it all started, in that little house right there. By the way, if that house looks a little crooked, it's because it is. We had an earthquake and I was unable to fix it. That's how poor I was. Okay, so you know ग्रेग से थोड़ा you know उसके जीवन के बारे में you know यूनिवर्सिटी के you know पहले you know उसका जीवन कैसे था, you know यूनिवर्सिटी काम होने के बाद कैसे था, आपको दिखाना चाहती हूँ. आपको पहला पिक्चर में देखा वो उसका पुराना you know हाउस था, you know कमरा था. So उसके क्या हुआ, so एयरपोर्ट में you know थोड़ा you know वो घर तो थोड़ा you know नीचे आ गया, you know उसको पैसा नहीं था you know सही करने के लिए. So उसका पूरा परिवार you know वो you know हाउस के you know रहते थे. अभी ये देख सकते हैं आप, ये you know यूनिवर्सिटी के आने के बाद, यूनिवर्सिटी में ज्वाइन करने के बाद, so आप देख सकते हो उसका पिक्चर, इतना बड़ा घर है, इतना you know आपको गाड़ी देख सकते हो, you know ग्रेग जी भी उसका you know बच्चों के साथ you know स्मार्ट लग रहा है. ओके, सो ये यूनिवर्सिटी के आफ्टर पिक्चर है. Yeah, and everybody, I want to be you know truthful. We're not showing you the pictures to impress you, but to impress upon you how, if you put yourself in the right mindset and you align yourself in the right business, how your life can change. A lot of you don't know this, but I actually grew up in an orphanage. So I grew up very, very poor. बहुत लोगों को पता नहीं है, you know ग्रेग सर ने you know so वो ऑर्फनेज में, वो अनाथ आश्रम में you know ग्रो किया. ओके, सो उसको you know उसको पता नहीं था मम्मी डैडी के बारे में. बहुत साल के बाद, 13 साल के बाद you know मालूम पड़ा था. सो वो अनाथ आश्रम में था, सो उसको मालूम में you know गरीब मतलब क्या है, पैसा नहीं मतलब क्या मालूम है. सो ये पिक्चर आपको देख रहे हैं, आपको you know इम्प्रेस करने के लिए नहीं है, वो मैं इतना बड़ा हूँ सोने you know वैसे के लिए नहीं मैं you know दिखा रहा हूँ, आपका मन में डालने के लिए. सो मैं इतना you know सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस में पीछे था, मैं आगे आ सकता हूँ, आप भी कर सकते हो, इसलिए मैं आपको ये पिक्चर में आपको दिखा रहा हूँ. Yeah, and I always believe a picture is worth 1,000 words. This is actually my first car I ever had before Unicity. यूनिवर्सिटी करने के पहले ग्रेग सर का पहला गाड़ी. And then these are the cars today. Many of you know I'm a big fan of high performance cars. So you know that happens to be a bad habit. But here's the great thing: when you start having your Unicity income and you contribute to other causes, maybe it's a charitable cause, maybe it's helping other people get through college. Yes, it's okay to have nice things. We are told, oh, money is the root of all evil. Absolutely not. Money is right up there with oxygen. So if you chase the money, it's going to be very slow. You won't do well. But if you focus on the people, they will see how much you love and care, and you will have so much leverage of both income and love that the money, I won't say it becomes irrelevant, but that's never what you're really chasing. You're chasing the lifestyle. You're chasing the happiness to provide a better life. And so it's okay to have nice things. Don't
Don't go with this thing that it's really bad to have a nice thing. It's a bunch of baloney. बहुत लोगों के साथ माइंडसेट क्या है मानसिकता क्या है, ओ पैसा तो बहुत खराब है, पैसा तो ईविल है, पैसा मेरे पास आ जाए तो मैं भी खराब बनूंगा. सो हमारा माइंड में एक ब्लैक है. ओके, सो आप पैसा पैसा तो ईविल तो नहीं है. ओके, सो इसके लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ पैसे के पीछे भागना है, पैसे के पीछे जाना मैं नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि पैसा आपको कंफर्ट भी दे सकता है और आप और लोगों को मदद भी कर सकता है. ओके, आपको मन में क्या होता है, कुछ लोग पैसा के पीछे जा रहे हैं, पैसा नहीं आएगा. आप किसके पीछे जाना है, मैं लोगों को मदद करना चाहता हूँ, मेरे लोगों का लाइफ को मेहनत ये बेटर करना चाहता हूँ. आप उसके पीछे जाएंगे, आप लोग मदद करने के में जाएंगे, आपका पीछे पैसा जाएगा. And also, I'm very visual, as you guys have probably figured out. This is actually my office in Asia. So I used to go to a dark building with an air conditioner blowing down on me, and a cubicle around me like a little hole, just doing this, trying to make money in commercial real estate. Now I sit out there in my shorts and t-shirts. I'll have a dirty chai, a nice iced coffee, and literally look at islands, out in the ocean. So this is very prevalent, because when you have your own Unicity business, there's no set time. You can do the business anywhere you want at any time you want. This is Phuket, right, Greg? Yes. Okay, yeah, so आप पिक्चर में क्या देख रहे हैं वो आप सोचें, अच्छा है, कितना अच्छा बीच है, कितना सुंदर बीच है, वो क्या है? ये एशिया में ग्रेग सर को यूनिवर्सिटी ऑफिस है. हाँ, ये ऑफिस है. हाँ, ग्रेग सर बोल रहे हैं, मैं यूनिवर्सिटी के पहले क्या किया, थोड़ा कमरा में, ये डार्क रूम में, और मेरा एक एसी था, मैं रियल एस्टेट में काम किया था. अभी ये मेरा ऑफिस है, मैं उधर बैठ सकता हूँ. मुझे क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए, एक फोन और एक लैपटॉप. मैं कहां भी दुनिया में कहां भी मैं बैठ सकता हूँ, मैं बिजनेस कर सकता हूँ. ये एशिया में फुकेट में सारजी का ऑफिस. And by the way, many of the people on this call have been there to Phuket. Some of you have seen my office. It's masterful what Unicity does. They create leadership events a couple of times a year. The one for India right now, you guys are going to be going to Singapore. Imagine you build a business based on blood, sweat, and tears. You don't have a lot of money into it. And this corporate entity is flying you down to Singapore for 3 or 4 days. Imagine you're on your way to Hong Kong or Paris or down to Phuket like Yoga and the rest of them did a few years ago. So the ability for you to have these vacations paid for based on your performance, this is extremely rare. You don't see these corporate benefits anymore, and we're big on it. It's everything to the company. यूनिवर्सिटी का फुकेट में भी ट्रिप हुआ. बहुत लोग हमारा बहुत लोग यूनिवर्सिटी का बहुत फ्री ट्रिप में आप तो बहुत लोग अटेंड किया. सो ग्रेग सर क्या बोल रहे हैं, आप देख लीजिए. ये बिजनेस करने क्या चाहिए? मेहनत करना है, आपका स्वेट चाहिए, पैसा नहीं चाहिए. सो क्या आपका समय, आपका मेहनत करना है, आपका स्वेट आप देंगे, सो आपका पूरा दुनिया को घुमा सकते हो. इतना इसमें मालूम मुझे, इतना लोग ये मीटिंग में बहुत दुनिया का बहुत फॉरेन ट्रिप किया कंप्लीटली फ्री. सो यूनिवर्सिटी का फॉरेन ट्रिप इतना अच्छा क्वालिटी है, आप सोच भी नहीं सकते. यूनिवर्सिटी कुछ भी करेगा वो फर्स्ट क्लास में करेगा. सो अभी भी सिंगापुर का रिवार्ड ट्रिप का प्रमोशन चल रहा है. सो आप भी मेहनत करना है, आप भी वो रिवार्ड ट्रिप को आप अटेंड कर सकते हो सिंगापुर. Yeah. And also, I touched on a little bit earlier, but down in the lower left corner here, look at some of the mentors that you have in India. Ramakrishna, one of the most amazing persons I've ever met. I mean, just has a most amazing wife, a loving family. B. Chandra, Dr. Chandra, I've been down to his house in Mysore. It's a beautiful area. It actually looks quite similar to my area here next to the beach in California. And Sharma, and of course, Dr. Yoga and Deepak. Over in Vizag, these are leaders that are still in process of growing. And so what you want to do is reach out to your upline leaders and ask them, hey, what am I doing incorrectly? How could I adjust my business? Sometimes you're just 1 degree off. This is really important. When I fly from the United States to India, if I'm 1 degree off, if the pilot who's flying the plane 600 miles an hour, if he's 1 degree off, I end up in Australia. Correct.
So you might be 1 degree off, which is why you're not anywhere near what you want. And as soon as you figure that out through these leaders here in India, your business could scale. You could go to a whole nother level like that. It's a limiting belief, and you just have to reach out and deal with people that have done it before you. Don't think you know it all. ग्रेग से क्या बोलना था आप पिक्चर में लेफ्ट में देख लीजिए रामकृष्ण जी हैदराबाद में रामकृष्ण जी है और हमारे मैसूर में हमारा डॉक्टर बी चंद्रा है मुंबई में शर्मा जी है और दीपक जी है छत्तीसगढ़ में और हमारा बात आपका गुजरात में डॉक्टर शास्त्री जी है मनीष जी आप ये लीडर को देख लीजिए इतना अच्छा लीडर है उसका कैसे वो जीत किया एक ही चीज थोड़ा माइंडसेट 1 डिग्री आपका माइंडसेट को चेंज करना है आप देख लीजिए फ्लाइट वैसे जा रहे हैं यहां से दिल्ली को आपको 1 डिग्री उल्टा हो जाएगा तो दिल्ली नहीं जाएगा वो बैंगलोर हो जाएगा सो आपका माइंडसेट में 1 डिग्री आप चेंज करेंगे आज आप डिसाइड करेंगे मेरा माइंडसेट मैं चेंज करूंगा मेरा लीडर तो जीत किया मैं लीडर को फॉलो करूंगा मैं लीडर का एडवाइस में सुनूंगा आप भी जी सकते हो क्योंकि इंडिया में मैं सच बोल रहा हूं मैं दिल से बोल रहा हूं इंडिया में इतना अच्छा लीडरशिप है लीडरशिप का प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है हमारा प्रॉब्लम हम फॉलो नहीं कर रहे हैं हमारा प्रॉब्लम है हम फॉलो करेंगे मेरा पास विश्वास है हमारा बिजनेस भी पूरा चेंज हो जाएगा Fantastic. Well, that's pretty much it. I wanted to share these pictures for you and let you realize that anything is possible. As you hang up the phone tonight and get off the Zoom call, you really want to try to come away with one item that could move you to action. And my recommendation is you really look around your value system and your belief structure. This is what held me back. Thinking maybe I was too young at the time, or I didn't have enough money, or the past, because I grew up in an orphanage. I didn't know my mom. I met my dad when I was 13. I barely got through school. We have all these limiting beliefs. So when you get off the phone tonight, next time you have that limiting belief tonight or tomorrow, just, give yourself a fist pump or do something to change your state very quickly to say, hey, that's ridiculous. You say, well, I've never been successful. That's ridiculous. Interrupt your state. And then what'll happen is you can have some fun with it. And like I said, move towards your fear. If you're fearful, you need to move forward to it. The more fear that you move towards, the less you become fearful. And above all, get in contact with these various leaders. You got an amazing corporate group down in Bangalore with Bakash and Vishnu and Deepa and everyone there. And Corporate Unicity, our chairman, Stuart Hughes, is behind you. And Christopher Kim. You can't ask for a better championship team. They're all on the field. You just need to get off the bench and get on the field, and things will start to happen for you. So I want to thank you very much. ग्रेग ने बोल रही है 4 चीज आप कृपया आपके पास कलम है लिख दीजिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अभी मीटिंग बंद होने वाला है सबसे बड़ा चीज आपका ये मीटिंग खत्म होने के बाद आप सोच लीजिए आपका लिमिटिंग बिलीफ क्या है आपका किस चीज आपका मन में अंदर है वो आपको रुकता है ओके आपका सीमित अनुभव उसके बारे में आप सोचना है आप लिख दीजिए नंबर 1 2 आपका फियर को आपको छोड़ने के लिए हम नहीं बोल रहे हैं आपको फियर के साथ आप जलने के लिए आप डिसीजन लेना है 2 और तीसरा आप मदद लेना है कहां से आपको मदद मिल जाएगा आपका इतना अच्छा सिस्टम है आपका सिस्टम को आपका लीडर है आप लीडर से बात कर दीजिए 2 हमारा कॉर्पोरेट में 24 आवर्स आपके लिए मदद करने के लिए हमारा कॉर्पोरेट लोग तैयार है हमेशा वो विकास जी है विष्णु जी है दीपा मैडम है सब लोग हमेशा तैयार है आपको मदद करने के लिए इतना अच्छा टीम है आपका सिस्टम है इतना अच्छा लीडर से कॉर्पोरेट में आप क्या करना आपका लिमिटिंग बिलीफ के सोचना है आपका किसमें डर सोचना है उसको आप डील कर मदद लेना और जीतना So thank you very much, and everybody have an amazing night. Bakash, I'm going to turn it back over to you, and thank you for everything that you and your team have done. I apologize for going over a little bit, but good blessings to you, and thank you for having me as part of the program. सब लोग का स्वागत बहुत धन्यवाद आप सब लोग आज मीटिंग में ज्वाइन किया हमको बहुत आभारी हूँ मैं अभी अभी हैंड ओवर कर रहा हूँ मिस्टर विकास जी के साथ थैंक यू